नाम है दिल की बात खिलाड़ी के साथ और मेरा नाम है सुप्रिया सक्सेना और आज मेरे साथ है इंडिया की यंगेस्ट फीमेल स्विमर टू विन अ मेडल एट एशियन पैरा गेम्स। वेलकम देवांशी। Thank you so much for having me. देवांशी इज सच अ प्राइड कि इतने कम उम्र में आपने इतना कुछ हासिल कर लिया है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि वो 2 साल की एज में अपनी सिस्टर को बचाने का ऐसा क्या जुनून आपके दिमाग में आया। अमूमन क्या है कि इतने छोटे बच्चे से हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और 2 साल की दिवांशी जो है अपनी बहन को बचाने के लिए पूल में कूद गई और अपने आप पैडलिंग करके बाहर आ गई। तो ये कहाँ से आ गया? एक्चुअली मैं बचाने के लिए नहीं कूदी थी। एक्चुअली वो एक स्विमिंग कंपटीशन चल रहा था। मेरी बहन दिव्या सतीजा जो कि इंटरनेशनल स्विमर है एबल बॉडीड में, उनका एक कंपटीशन चल रहा था एंड मैं 2 साल की थी या फिर 2.5 ईयर की। तो डीप साइड के पूल डेक पे मैं उन्हें चेयर कर रही थी, फास्ट दीदी फास्ट। एंड मैं बहुत छोटी सी थी एंड मुझे पता नहीं चला मैं कब गिर गई एंड मेरे आसपास वाले लोगों को भी पता नहीं चला मैं कब गिर गई। एंड जब तक उन्हें पता चला वो मेरे लिए कूदते नीचे और कंपटीशन भी चल रहा था उस दौरान, तो मैं अपने आप ऊपर आ गई। एंड ये देख के मेरे मम्मा पापा को लगा कि मेरे को स्विमिंग सिखाना ज़रूरी है या फिर मेरे अंदर ऑलरेडी एक इंस्टिंक्ट है पानी के प्रति, तो उन्होंने मेरे को स्विमिंग सिखाना ज़रूरी समझा। उसके बाद इसके बाद मैं पानी से काफ़ी डरने लग गई थी एंड मैं काफ़ी रोती थी जब मेरे मम्मा पापा मेरे को स्विमिंग करवाते थे एंड सब उन्हें बोलते थे कि फोर्स ना करें मेरे को, कि मुझे हाइड्रोफोबिया हो जाएगा या मुझे हमेशा के लिए पानी से डर लग जाएगा। बट उसका ऑपोजिट हुआ एंड अच्छा वो उन्होंने फोर्स करा ताकि मैं अब यहाँ पहुंच सकी। बिल्कुल, एनी टाइम, यानी द स्टोरी वाज द अदर वे अराउंड। आपको बचाने के लिए लोग लोग कूद पड़े थे। आप किसी को बचाने के लिए नहीं कूदे थे। नहीं। ओके, देन राइट। बट द जेस्ट वाज एक्चुअली वेरी एनकरेजिंग। बात तो यही रही कि 2 साल की उम्र में एक बच्ची कूद जाती है पानी में, गिर जाती है पानी में और अचानक अपने आप बाहर आ जाती है। दिस इज कमेंडेबल। फिर 10 साल की उम्र में आपके पेरेंट्स ने आपको कॉम्पिटिटिव स्विमिंग में डलवा दिया। तो ये इंस्पिरेशन उनमें कहाँ से आई? क्या आपकी ये चॉइस थी या उनको लगा कि नहीं अब इसको ही सिखवाना ही चाहिए? नहीं, सिंस मैं पानी के आसपास खेलना स्टार्ट कर दिया था, एक स्टेज था कि मैं पानी से डरना बंद कर दिया था, मैं अपने आप कूद के खेलने लग गई थी पानी में। सो मैं मेरी बड़ी बहन के साथ प्रैक्टिस पे चली जाती थी एंड देन धीरे धीरे मैंने स्विमिंग सीख ली थी। हमारी स्कूल में डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप हो रही थी, तो ऐसे ही मैं ट्राई करने चली गई एंड आई परफॉर्म्ड वेल। मेरे मेडल्स आ गए, दैट्स हाउ आई गॉट इनटू कॉम्पिटिटिव स्विमिंग। And later on I got to know about para swimming as well. तो उसके बाद मैं पैरा स्विमिंग के वर्ल्ड में आई थी एंड वहां से इट्स ऑल ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। एग्जैक्टली। सो अभी प्रेजेंटली क्या ऐसे गोल्स हैं आपके, क्या इमीडिएट गोल्स हैं? वेल आई वुड से कि to 2026 Asian Para Games will be my next goal. And of course, Commonwealth is also coming up. For long term goals, of course, 2028 Paralympics, which are going to be held in LA. From 29th March to 31st March, we had nationals in Gwalior just या 2-3 days back. And I won 3 gold medals and 1 silver medal for the relay in that, and an individual championship as well. ओके, सो यू रिप्रेजेंटेड विच स्टेट? Haryana. I'm from Haryana. Okay, so you represented Haryana. I think Maharashtra topped the tournament, Yes. and then second uh, was Karnataka, and third was, I guess, We West were at Bengal. seventh. We were as at seventh. But this is the first time our relay actually won a silver medal, so which was commendable for all the team members. Yeah, exactly. But Devanshi Satija was a gold medalist, and that's the story which we have to be focused on. You were born with congenital disability. Something about this disability we would like to, learn. Um, so see, I have a very minimal disability in my right hand actually. Uh, so why I say very minimal, because I'm in S10 category, which is a category of very minimal disability, and as we go down S9, S8, S7, back till S1, the disability gets more severe in swimming classification. So according to me, I don't know, it might seem an answer that you didn't expect, or it's an unusual answer, because I never
had थॉट्स लाइक कि कुछ डिफरेंट है, कुछ डिफरेंट नहीं है, जब तक मैं स्कूल नहीं गई थी। स्कूल में ऑफ कोर्स बाकी लोग थे एंड देन दे टोल्ड मी कि हाँ यू लुक डिफरेंट एंड कॉल्ड मी नेम्स एंड दैट्स व्हेन आई नो कि चलो ठीक है कुछ डिफरेंट है। But before that, it was just kind of a way for me to figure out what's right and what's left. Five fingers left, four fingers right. That's how I figured out world, and it was nothing different for me. If anything, it was a superpower. I have seen adults being confused in right and left, and I never had that problem. So I think that's how I saw it until I went to school, and then bullying happens. People tell you you are different. You tell them, "कुछ फर्क नहीं पड़ता." So what? I'm different. So that's how the story goes. व्हाट अ स्पिरिट मैन। सो दिवांशी, कोई एक ऐसा इंसिडेंट आप हमारी ऑडियंस से शेयर करना चाहोगे जिसमें आपको कभी बुली किया हो और उसके बाद आपने अपने अचीवमेंट से उस इंसान को मुंह तोड़ जवाब दिया हो? कुछ ऐसा याद है? जी, इसका भी पर्सपेक्टिव बहुत ही अलग डायरेक्शन में जाता है कि जब मेरे मेडल्स आने लगे थे एंड जब मेरे को मीडिया में अटेंशन मिलने लग गई थी, मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर आर्टिकल्स राइटर्स ऑलवेज रोट इट एज कि यस कि आई वाज बुलीड एंड देन आई डिड दिस टू रिवेंज देम एंड ऑल ऑफ दैट, बट I kind of felt like they didn't have any part in my achievements. Of course, why would I give them credit of my achievements कि उनको revenge दिखाने के लिए I did something? It was never that way. I mean, of course, to get away from it, I found swimming and I found peace in swimming. I found friends in swimming. I found respect in swimming. But that doesn't mean it was to show them. It was nothing like that. It would never be like that. If anything, it was because and for my parents, coaches, and all the supporters that I had. So there is nothing like that, any incident, because always in disguise there is a very famous saying, success is the best revenge. Whether you are achieving the success just to take revenge, or just to prove yourself your worth, that's the best, because अपने Yeah. आप ही लोगों को उनके जवाब मिल जाते हैं, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। On this So note if comes my anyone next question कि आपने, या So if anyone wants to take it as an answer, they're welcome to, but it was never my intention or my answer. So I would never reply to those people in that way. I don't have to. So yeah. बिल्कुल। वैसे देवांशी, मैं आपसे जब भी मिली हूँ आपके चेहरे पर ये हंसी हमेशा देखी है मैंने, और इतना चार्मिंग पर्सनालिटी लगती है आपकी। इसके पीछे कोई खास वजह है? कोई मंत्र है, किसी ने सिखाया है आपको कि हमेशा हंसते रहो, खुश रहो? Nothing like that. See, I think when you grow up and you have a way and perspective of things, जैसे I told you, I never thought I was different. And even अगर बचपन में मुझे bully करा जाता था, when I grew up like ऐसे 6th 7th class में, I realized that it's not their mistake. I mean, if I was one of them and I was in front of a disabled person, and since I wasn't taught any better, कि मेरे को कभी इंट्रोड्यूस करवाया ही नहीं गया था ऐसी चीजों में, of course we'll question the different things. Of course we'll, I wouldn't say make fun of it, but how would you ask a question and not make fun of it? So I think that's how kids learn, right? So I never thought that it was a bad thing on their part. Of course, when I was a kid, कि मेरे को बुरा लगता था उस time पे, because no one wants to feel ऐसे stand out. But as you grow up, you realize कि वो भी छोटे बच्चे थे and you were छोटे बच्चा as well, that they didn't know any better. And as we are growing up, we are all growing up. So that's my point. And when you start seeing life in that way, or even seeing life in a way that's easier for you, it might not be that kid's intention. He might be actually bullying you and he knows what's wrong and what's right. But my question is कि अगर if you get peace in thinking something a positive way, it might not, the person might not be positive, but if you think he's positive, then what's the harm? At least you get the peace of mind and smile on your face. Who cares? That's what's important. तो दिवांशी इज एट दैट लेवल कि आप कोई हिम्मत नहीं कर सकता दिवांशी को ये कहने की छोटी बच्ची हो क्या, नो बडी कैन से, हाँ? I'm 21 now.
And लोग पूछते हैं आपका रियल लाइफ हीरो कौन है, मैं पूछूंगी आपकी रियल लाइफ हीरोइन कौन है? of course, my sister forever. She's my ideal. She has, like, I've seen her hard work, and that's what inspired me to work harder. What inspired me that she never thought of goal before doing the hard work. अक्सर हम ऐसे सोचते हैं कि ये अचीव करने के लिए मेहनत करनी है, मेहनत करनी है फन के लिए, मेहनत करनी है अपने लिए। अचीवमेंट आएगी तो ठीक है, वरना कभी गोल था ही नहीं वो। तो that mindset, I think, is really important so that you can take the pressure off yourself, ताकि इतना प्रेशर ना उस लेवल तक पहुंचने के लिए, because that was never the goal. It was the fun, the journey part. So, like Devanshi, now, I mean, since many years, I mean, past, you can say, especially 4 to 5 years down the lane, एक अलग सा बूम आया है स्पोर्ट्स पे, आई मीन स्पेशली इन पैरा स्पोर्ट्स। तो उस पे हम्म। क्या कमेंट है आपका? हाउ डू यू टेक दिस? जैसे हमें पता है कि हमारे पहले एशियन गेम्स में कम मेडल आए थे, नेक्स्ट एशियन गेम्स में हमारे एबल बॉडीड से भी ज्यादा मेडल्स आए, एंड इवन इन ओलंपिक्स, वेल आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर द ओलंपिक्स स्टैटिस्टिक्स, but of course para sports is growing, and it might even be growing faster than able bodied sport. But when the para sports will grow, things like this talk show will also grow. They'll get more media attention. More media attention, that means more funds to grow them in sports. And of course, in turn, that will grow it more. So I think everything has happened for a positive reason, and I'm hoping the support system can keep up the growth rate as the parasport is growing. Yeah. So, who is your coach? I have been around with multiple coaches. So the coaches who actually got me into para sports were Kawaljeet sir and Dabas sir. But I have also trained in Bangalore. I have also trained in Delhi. I have also trained in Faridabad, and it feels wrong to only name one person, and we don't have time for all the people that I've trained with. It's been Chand Singh Tokas, Sharad Gaikwad sir, Jitendra Tokas. There have been multiple people who have been part of my journey at every point, every state I need them, they are there. So I wouldn't say if there's one coach, they all got me here, and my parents got me here. So yeah. So, Devanshi, like in leisure, in your free time, what is your one favorite time pass? I like to draw. I like to draw portraits, and I was in bit of fashion designing for some time. But currently, I'm studying in SRCC Shriram College of Commerce. Oh, So I was quite into societies and all of those things. I was also a part of NGO for some time. So there's a lot of things. I don't have one hobby. It's like uh, if I'm doing something, it's break from another thing. So it's never not fun. so Yeah. like as you mentioned, you are into like studies also. So, what according to you, पढ़ाई का या एजुकेशन का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है खिलाड़ी के जीवन में भी उतना ही, बताओ। See, I can only give my opinion on this. Sure. Was it might be thoda sa controversial, but I feel that studies till 12th is very, very, very important. And my parents always said कि पढ़ाई तो होगी होगी, and if you want to do swimming you will handle both, ठीक है? So they treated it like that, and it might have put pressure, but again, diamonds are made under pressure, right? So my point is, if someone's And what about parents diamonds are made under pressure? Great. बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, बताएं अब आगे। so of course my parents wanted me to get into an amazing college. uh, so I did get into Shriram College of Commerce, which is Asia's best college in commerce. Yeah. I also got into NIFT, National Institute of Fashion and Technology, because I was interested in that as well. So I gave the entrance exam also. But I think most important is if you have a direction, you study till 12th, you know what you want to do, and you can use that studies
wala knowledge in your sport as well. I don't think I would ever be able to get here if I wasn't I didn't have that urge to study, to read. It might even have taken pressure off swimming that studies it. Like most people say कि दोनों चीजें करना प्रेशर है, but I felt कि मेरे पास दो चीजें थी तो मेरे पास प्रेशर कम था उल्टा. That when I was Hmm. studying, I was taking a break from swimming. When I was swimming, I was taking a break from studies. And that time management, that patience has helped me a lot in my sport as well. Okay, great, great to know. So, like, what is your daily regime? How how does your day? How is your day planned? Right now, so I've like it's only been 2 days after my nationals. So and now right now I'm at off, but usually when I was back in school, then it was a crazy hectic day. 3 years back. But my day used to be like waking up at 3:30, going to Delhi for training, coming back to school, attending school, coming back home, sleeping, eating. Actually, I used to do both at once because I used to sleep and my mom used to feed me. And I wouldn't even remember कि मैंने खाना खाया है. But उसके बाद either I used to go to a tuition या फिर gym, then come back home, uh, maybe do homework or do homework and eat. My dad would be feeding me while I used to do my homework and then sleep and repeat. That's how my school days used to go like. But in college, you have the freedom to take offs. I not respected the eating part. Eating part was always an optional thing for you. During sleeping, you have to eat. Was it During optional? Lucky it was something I didn't have to worry about because my parents were so sweet. They used to feed me. oh, it's an awe moment. Uh, So this is really lucky. I mean, having a very supportive family is like a backbone of yours. Whenever you are geared up to achieve your dream, to fulfill your dreams. तो इस तरीके का सपोर्ट हर एक को नहीं मिलता देवांशी. तो आप कहाँ देखती हो अपने आप को इस इटर्निटी में? आई मीन कि आप रोज भगवान को थैंक्स बोलते हो कि इतना सपोर्टिव फैमिली मिली है. सोसाइटी की तरफ से तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको किसी तरीके से डाउन ट्रॉट किया गया हो? I don't think so. If you have a such strong internal support, I don't think you look for external validation. And if you do Hmm. receive external validation, you're just thankful for it that you are capable to get to that level. So yeah. Okay. You visited last December, you visited, our event that is Yeah. Radiant Differently Able Sports Awards. So, इस तरीके के जो इवेंट्स होते हैं जिसमें दिव्यांगों के लिए जो सेपरेटली कराए जाते हैं कि भाई उसमें कोई एबल बॉडी नहीं होता, जो भी फेलिसिटेशन है, जो भी ऑनर है, वो केवल पैरा एथलीट्स का हक है उसमें. तो ऐसे इवेंट्स के बारे में आपके क्या कमेंट्स हैं? As I was talking about कि जैसे जैसे पैरा स्पोर्ट्स ग्रो होगा एंड आई एम होपफुल कि पैरा स्पोर्ट्स के लिए सपोर्ट भी ग्रो होगा एंड आई थिंक रेडियंट स्पोर्ट्स अवार्ड वाज वन ऑफ द बिगेस्ट supporting system that's coming up recently. So it was really nice to be a part of it, and I loved how you guys handled it all and conducted it. ओके देवांशी. ओके. आपका जो स्पोर्ट है उसके लिए हम ये जानना चाहते हैं कि कोई ऐसे 5 स्पोर्ट्स टर्म बताइए जो एज अ लेमैन हमें ना पता हो, और अगली बार जब हम आपको स्विम करते हुए टीवी पे देखें तो हम गेस कर पाए कि अच्छा देवांशी ने हमको एजुकेट किया था इस बारे में. Okay, so मेरा मेन स्ट्रोक है बटरफ्लाई स्ट्रोक. या. And well, freestyle is very common, but when we take a turn, we say that it's a flip turn or a somersault. So that's the turning point, like the language, like the word for a turn. And what else? So there's a T point right under the pool when you are about to touch the wall, right 5 meters away from the wall. So when you see it, you have to count your hands so you know that you're gonna touch the wall and then take a flip turn and then go back. So if someone misses that, they might hurt their head as well. And same things, the down below on the floor of the pool is the T, and in the upward direction is the flag.
Both are on the 5 meters, and the flag helps you count your hands to 5 meters to the wall in backstroke. So which is another stroke. तो ये समरसॉल्ट वही होता है ना, धोबी पछाड़ कहते हैं सब हिंदी में ना। So हम वो ऐसे जिम्नास्टिक में से सर्कल सर्कल करते हैं ना, नहीं नहीं, जिम्नास्टिक में हम सर्कल सर्कल करते हैं ना, फॉरवर्ड वाला हम बेड पे खेलते थे कभी किसी टाइम पे, तो दैट जस्ट इन वाटर टू टेक अ टर्न। हाँ, ओके ग्रेट। तो अब जाते जाते मुझे इस शो पे दिल की बात बता के जाओ, बिकॉज इस शो का नाम है दिल की बात खिलाड़ी के साथ, और देवांशी हमारे साथ है इतनी गिगल करती हुई आवाज में, और इतनी बबली पर्सनालिटी हमारे साथ है, तो हमें दिल की बात हम यहाँ जरूर कहलवाना चाहेंगे। वेल आई थिंक मेरा मैसेज अभी यही रहेगा कि जितनी जगह ले सकते हो, जितनी स्पेस ले सकते हो, जितना स्पीक अप कर सकते हो उतना करो, बिकॉज इफ यू ब्रेक वन बैरियर, द अदर पीपल बिहाइंड यू विल हैव अ इजियर पाथ. So if you can do that, please do that, and I'm trying my best to do that for you. So yeah, So that you will be my message. people should become a path breaker. They should break the barriers and make their own way. Thank you Yeah. so much, Devani, for your time. It was very enticing talking to you and watching such a charming face. Thank you so much. Thank you so much for inviting me. Thanks, Devanshi. Bye bye.